Hello everyone, good evening. Welcome to InstaSol live session. Myself Himanshu Parikh. Once again, welcome to lecture number 3 on wave optics. Alright, so who all are present? Say me hi in the chat box. Hello Aditya, hello Shifa, hello Rishabh. How are you? This is not the first lecture on optics, Shifa. You can watch other 2 lectures. I have already taken 2 lectures on wave optics, so you can watch them. Alright? I have solved some questions. Hello Surbhi, hello Sonu. Hi. Hi everyone. So, alright, so how many people have attended the first 2 sessions which I have taken on wave optics? Hi Shubham, how are you? So how many people have attended the sessions which I have taken previously before this, the other 2 sessions in which we have discussed the YDSC, Young's double slit experiment. Alright. So no one? Okay. Balho has attended. I couldn't attend the first 2 sessions. Okay, Nitish. So you can watch them. The recording is available. Hello Chetan, how are you? Lecture number 3, Shandar, Jabardast, Zindabad. Okay. Hello Aman. So I can see a lot of people are there in the chat box. Alright, so let's start this session. So I will be starting this session with one question. Okay. So these questions I have already solved. You can watch them in the recording of lecture number 1 and lecture number 2. Okay. So today I would be starting with this question. Okay. Alright. Hello Rajvinder. So this is the first question. I'll dictate the question for you. YDSC is conducted in water medium. Okay. And the refractive index is mu1. As shown in the figure, a glass plate of thickness T and refractive index mu2 is placed in the path of S2. So this is slit S1, this is slit S2, exactly the same apparatus which we use for YDSC, right? But now what I have done, I have kept the apparatus, this whole setup in water medium. Let's say swimming pool में रख दिया पूरे setup को उठा के, ठीक है? So this is the slit which I have kept here in front of S2. This has refractive index mu2 and thickness of the slab is T, okay? The small t. Okay, and now you have to calculate the optical path difference. Okay, so I'll try to speak in Hindi. Hello Uzair, how are you? This is physics Dabala. So this is physics session and this is lecture number 3 on wave optics. C is the right answer. Okay. English please. Okay, I would speak in Hindi and English both. Alright, so everyone can understand in English I guess. So I'll try to use Hindi and English both. Alright, Namaste Abhishek, how are you? So C is the right answer. As you already know, in the last session we have solved one question like what is the optical path difference because of like if you insert a glass slab. And the value which we got was mu minus 1 into T, right? This is the part difference, extra part difference because of the insertion of optical of a slab having refractive index mu and thickness T. Now, always remember this mu is relative. Relative to what? Relative to the medium in which the slab is kept. Okay? Alright, so now I would use like if it is a water medium, so I can write the refractive index of this glass slab that is mu2. Okay, I'll erase this part. So the refractive index of glass slab that is mu2 divided by with respect to outside medium, it's mu1. So mu2 by mu1 minus 1 multiplied T. So अगर ये option दिख रहा है तो tick mark कर दो and that's option C. So this thing is very helpful in prism also. In my session of geometrical optics, I have solved one question where the prism is kept in the water medium. Okay, so in that case, I have taken the same analogy like deviation produced by a thin prism is mu minus 1 into A, where A is the angle of prism. Okay, so in that case also if the prism is kept in the water medium, then what I am going to do? I am going to replace that mu with mu divided by refractive index of the medium. Always remember. Yes, Aman. So मैं क्या बोल रहा हूँ? Good evening everyone. So people who have joined late, good evening to all of you. Right? So मैं क्या बोल रहा हूँ? Now I'll explain the same part in Hindi also. ठीक है? तो देखिए मैंने ये बोला है कि जो optical part difference होता है वो होता है mu minus 1 into T. ठीक है? अभी mu minus 1 into T में
ये म्यू क्या लिखते हैं हम लोग, हमेशा रिलेटिव लिखते हैं, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू द मीडियम। और ऐसा सेम केस हमने प्रिज्म में भी एक क्वेश्चन किया था। तो प्रिज्म में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा ये था कि डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर थिन प्रिज्म आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो थिन प्रिज्म अप्रोक्सीमेशन लेके बोल रहा हूँ। तो वहां पे भी वो जो म्यू लिखते हो आप, वो हमेशा रिलेटिव होता है किसके, मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब आपको दिखता नहीं है वो, क्यों? क्योंकि जब भी कोई बुक या कोई भी टीचर एक्सप्लेन करता है तो हमेशा बाहर का मीडियम एयर लेता है, वैक्यूम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। और लेना भी चाहिए, क्यों? थोड़ा सिंपल लगता है, एक बार चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। और मैंने एक सेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू गाइस कि if you take refractive, like if you take the medium outside other than air or vacuum, then what would be the value of angle of deviation, right? So now I'm going to write the relative one, so mu2 by mu1. This mu1 is the medium of water, all right? Right. Okay, so everyone understood this part, like why this is C? Okay, then now I can go to next question then. That's nice कि काफ़ी लोगों ने आंसर कर दिया क्वेश्चन। Okay, this is another question. This question is from SC Verma, right? Most of you must solve this question. So I thought we should take this question because this is a particular type of example. So I'll dictate the question for you guys. We have two coherent point sources, S1 and S2. So this is S1, this is S2. Vibrating in phase, emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. Okay, this separation is 2 lambda. Consider a line passing through S1 and S2. Consider a line passing through S1 and perpendicular to line S1 S2. So this is S1 S2, right? And passing through, it shouldn't be S1 actually, it should be S2. It's a mistake, it should be S2. Passing through S2, okay, and perpendicular to this line. Find the position of farthest and nearest maxima, minima. अब एक्चुअली होगा क्या इस क्वेश्चन में, थोड़ा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि दिस S2 सोर्स starts moving along this line. Okay, this S2 source starts moving along this line. So we have to calculate the position of farthest and nearest minima. So now this question is clear. So I'll explain the question once again. This question is incomplete, I guess. Okay, so this S2 source starts moving from this particular position. So this is the situation at t equal to 0. Now this S2 will start moving along this line which is perpendicular to S1, S2. We have to calculate the position of farthest and nearest minima. Sir, आप SHM कब कराओगे? So let me finish this wave optics part, okay, and I'll come to SHM also if you guys want that. So how many people want sessions on SHM solely dedicated to simple harmonic motion? How many people want the session on simple harmonic motion? कि complete एक पूरा lecture series चला दो sir on simple harmonic motion. No. Optics के लिए we will try to finish optics today. Like I have to take the topics of Fresnel biprism. I have to take Lloyd's mirror. ठीक है. उसके बाद हम लोग अगर आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, then we don't need more lectures on wave optics. I'll choose another topic whichever guys you want. I want SHM. So Pia wants SHMs. Okay. Then Abhishek also want SHM. Okay, not bad. Also want SHM. That's not bad. Okay. And then Sanjeet Kumar, question is not clear. Though I explained you the question, I'll explain it once again. We have 2 point sources, S1 and S2. They are coherent with each other. Okay. And the separation between them is 2 lambda. Now this source S2 starts moving along this line which is perpendicular to S1 and S2. And now we have to calculate the position of farthest and nearest minima. Okay, so Rishabh wants lectures on electromagnetic induction. So I need at least 10 or 15 views. Okay, so majority says SHM. Aryaman also says SHM. Okay, then we'll go for SHM from the next session. Alright, so you would be attending the sessions for SHM? Everyone is ready with SHM then?
Everyone is ready with SHM? Okay, Arjit is also ready with SHM. So you have to attend, but that's the condition. Okay, so Pranay is also ready with SHM. Abhishek is also ready. That's nice. तो ठीक है फिर, done, promise. From the next time I will be coming with simple harmonic motion. एक complete lecture series चला देंगे कि simple harmonic motion in linear direction, linear dimension, simple harmonic motion angular case में पूरा एक lecture series. ठीक है. Okay, so now you try this question. I have given you one question. Everyone try this question. This is a very nice question from H.C. Verma. So everyone try this question. Hello Pooja, you have joined late today. It's fine. This is our second question. You can watch recording for the missed session. So I want to take PDF of theoretical part of optics. You will get it definitely, Abhishek. You can search on the online websites like Ask IITians and all. You will get it from there easily. Like they have lot of materials. I have followed them. Options. ठीक है, options वैसे है नहीं इस question के लिए. Still I'll try to give you some options. So you can take options like let me write option A, lambda. I'm writing first farthest minima, then nearest minima. Okay, so first I will write farthest minima, then I'll write nearest minima. So farthest minima will be at, let's say, lambda, then 0. Okay, then another option you can take 0 and 2 lambda. C option 2 lambda and 0. D option 0 and lambda. What's the point P? ये point P कोई भी डिटेक्टर है, मतलब एक जहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है तो कहाँ पे डिटेक्ट होगा. So मतलब point P is a variable point, right? So what is the location of point P for minima and farthest and nearest minima? That's what this question is asking. Okay, so Kushal is saying B, Madhavi is saying B. Okay, Aryaman is saying chill. Chill matlab C. That's the word I use in my classes. Okay, most of the people are saying B, but we have Rishabh who is saying D. Krishna is saying B, Arijit says B. Okay, Priya also says B. Obviously, so what is the reason, guys? The reason is very simple. कैसे? कि if this source 2 starts moving, ठीक है, तो farthest minima कहाँ पे होने वाला है? देखो, farthest minima when this source 2 reaches at an infinite position, very far away from this point, right? That time, what is the separation between these two? देखो, वहाँ से मान लो यहाँ चला गया source, बहुत दूर मान लो. All right, that time, this distance and distance from here would be almost same. Yes or no? They are almost. हाँ, Krishna, you also said B. I think I took your name. Okay, Abhishek, you are the winner then, if you have first told, right? So at that time, the separation between them from here would be exactly same. The separation from this line would be exactly same, right? So if this is the location, let's say, the very far away from this line, let's say x distance. So from S1, this point P would be at x distance, and S2 also would be at x distance. Okay, so farthest minima, right? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? देखो, ये सेपरेशन क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, ऑल राइट. एंड नाउ सेकेंड केस, जब वो यहाँ पर है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, एट द इनिशियल लोकेशन. ऑल राइट, सो क्लियर दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था. ऑल राइट, सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? शैल वी गो टू नेक्स्ट पार्ट देन, लॉयर्स मिरर. Okay, so now I'm going to second point.
the Lloyd's mirror. So how many people have doubt in Lloyd's mirror? मतलब पहले कभी पढ़ा है आपने what is Lloyd's mirror? It's a kind of experiment actually, guys, right? It's a kind of it's a kind of experiment actually, right? Just to make the two coherent sources of light. So what he did actually, let's say we have a source of light here. And now if I keep a mirror over here at this position, this is a mirror, plane mirror. Okay, नहीं पढ़ा है कोई बात ना, आज पढ़ लीजिए फिर Lloyd's mirror, ठीक है. So it's like basically application of YDSC. That's what I'm going to do here. So this is a one source of light. देखिए अभी मैं एक सोर्स लेके दो सोर्स बना लूंगा, देखना कैसे, जादू. I have only one source of light, okay, and now I have screen somewhere here. ये हमारा स्क्रीन हो गया, okay. याद आया, पढ़ा हूँ सर, ओके दैट्स राइट, जब आपका रिवाइज हो जाएगा आज, ठीक है. तो देखिए यहां से मान लो एक लाइट रे चला. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल रिफ्लेक्ट ऑब्वियसली, राइट. इट विल फॉल ऑन द मिरर लाइक दिस. Let's say this is point P, okay. You will have so many light rays coming from this point source S. It will fall on this plane mirror and it will reflect here, ठीक है. इसके नोट्स बना लेना सब लोग, ठीक है. तो अभी बस देखो विनर वगैरह सब बंद करो, समझ गया मैं कौन विनर है. तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है. चलिए, हेलो आकाश, यू आर लेट. सो लेट्स से वी हैव वन पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट एंड नाउ द लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन दिस मिरर एंड व्हाट विल हैपन नाउ, after reflection they will reach at this particular point on the screen, okay. Now see this point carefully. We are not having light only from reflection from this plane mirror, we can have lights from here also, right. We can have light directly coming from this source, yes or no. देखो light rays यहाँ से directly भी जा रही होगी, directly light rays are going from this point to this point on the screen, and also light rays are going from after reflection from this plane mirror on the screen, yes or no. दिखाई नहीं दे रहा है सर, okay. I'll erase this part. I'm sorry guys. I'll erase this part. Okay. Now this is our source of light. Light rays are falling on this plane mirror, okay, and after reflection what would happen, they will reach somewhere here. Now it is visible, yes everyone, it is visible now. This is our screen, okay. नेट स्लो है सर आपका? नहीं, नेट बिल्कुल अच्छा चल रहा है. Okay, so is it visible now? All right. So light rays coming from this source of light, from this point, it is falling on this plane mirror, and after reflection, it will go here. It will take this path. But this is not the only path. Light rays are not coming only from the reflection part from the mirror. Light rays are coming from directly from this point also, right? भाई देखो light rays are coming from this point directly on the screen, yes or no. Light rays are coming from reflection also, yes or no. और YDSC के लिए आपको यही तो चाहिए, you need two waves, okay, and the phase difference between them should be constant. That's the condition for the sustained interference, right? That's the condition for sustained interference. Otherwise interference तो बन सकता है but वो sustained नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है. All right, right? Okay, so now we have two sources of light basically. How? This screen will say one light I am getting from here, another light I am getting from this point, okay. So let me call this one S1 and this one S2. So S2 is the virtual source of light. Are you getting my point? Okay, so S2 is the virtual source of light, okay. So now we have two sources, okay, S1 and S2, and this S2 is the virtual source of light, okay.
And if you have two ways, if the phase difference between them is constant, then definitely you'll get the interference pattern on the screen. Yes or no? Right? Definitely you will have the interference pattern on the screen. So this is some point P, जो हम लोग YDC में normally लिखते हैं, any point P on the screen, right? We write the position of like tan theta is equal to Y upon capital D. So what are all these things? So let me join them by this line, S1 and S2. Oh. Okay, so now if I join them by this line, then this separation is small d. Okay, separation between S1 and S2 is small d. Okay, and now this distance is capital D. अब तो exactly same चीज हो गया है. It's exactly same now. Okay, but अभी भी एक problem है इसमें. What is the question, like the main thing in Lloyd's mirror? तो अब मैं लिख रहा हूँ the position of maximas and position of minimas. Okay, so what are the position of maximas here now? So maximas के लिए condition I know that delta x should be equal to L lambda, right? This is the condition for maxima. Delta x should be equal to L lambda. All right. Now, can you tell me one thing? In this case, what is the optical path difference? In this case, what is the optical path difference? So that's the important question. So everyone reply me in the chat box, what is the optical path difference in this case? देखिए, इसको सोचने का थोड़ा तरीका बताता हूँ आपको. If you don't have this mirror, simply assume कि this is S1, this is S2, ठीक है? So from here if you draw a line, right? This is angular position and यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा, say central line हो गया, okay? So if this angular position is theta, तो कितना पार्ट डिफरेंस आता था बिटवीन दिस लाइन एंड दिस रे, बिटवीन S1P एंड S2P कितना पार्ट डिफरेंस होता था? यू यूज्ड टू राइट इट लाइक दिस, राइट? दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज द पार्ट डिफरेंस d sin theta, not d minus s. What is s? S is just source actually. d minus s आप कैसे बोल रहे हो? No, that's wrong. D minus S is not the path difference. Alright, so see now, this is the path difference. अब ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. This is the path difference. अभी एक बार मिरर को भूल जाओ. Forget about this part. If this is the YDSC apparatus S1, S2, okay, and this is point P, this is at an angular position theta, तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? हम लोग इसको लिखते थे कि the path difference is this. You used to draw two lines, okay? This is S2P, this is S1P, and now you take a perpendicular from here, okay? And sorry, not this perpendicular, this one, okay? And this is the extra length which this light ray has to travel. And what is the distance? D sin theta. ये होता था path difference in usually YDSC. But यहाँ पे एक और trick है. तो now you think about it. अब यहाँ पे mirror भी है. How you are producing this light ray? Because of this mirror. This light ray, the S2P, you are getting from the mirror part. Okay? So, उसकी वजह से क्या चेंज आएगा? अब सोचिए. So, Piyush has given the right answer. Piyush, can you explain the reason? Can you explain the reason, Piyush? What is the reason, like why there should be an extra term of lambda by 2? No, JD10, don't do that. Let everyone attend the lecture. All right, so क्या करें? किसके लिए? इसके लिए तो सोचिए जरा क्या करें. देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना, ठीक है, वो उसका फेज
180 डिग्री से चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको जहाँ मैं याद दिलाता हूँ, आपने वेव्स पढ़ा है इन क्लास 11th? इन क्लास 11th आप लोगों ने वेव्स पढ़ा है? हाँ, वेरी गुड पीयूष, दैट्स द राइट आंसर। पाई फेज डिफरेंस व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। सो जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड आई हैव कनेक्टेड दिस स्ट्रिंग टू वन एंड ऑफ द वॉल, ओके। अब जैसे मान लो मैं कुछ पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग सम पल्सेस, देन व्हाट विल हैपन फ्रॉम द रिजिड एंड, right, this is a rigid end, you can assume it like a rigid end, you will have the inversion of wave। ठीक है, तो अगर मान लो पहले वेव ऐसे जा रहा था, right, so after reflection, after being incident on this wall, जो inverted wave होगा वो कुछ इस तरह से होगा, right, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, right, so that's the phase difference of pi between incident and reflected, and the same thing is happening here. The phase difference between this S1p and S2p would be pi also because of this mirror. So clear this part, why we will have the phase difference of pi extra. Is this point clear to everyone? Any doubt in this? So किसी को अगर इसमें doubt हो तो पहले पूछ लो, otherwise I'm going to add it there with the d sin theta part. Already you have d sin theta part difference, and now because of this mirror there is an extra phase difference of pi. Right? So Abhishek, this part is clear why there is a phase difference of pi because of this mirror. Yes, all of you? Are you there? If you respond, if you are there. Okay, so now what I can write for maxima? Delta x is equal to L lambda, but what is the total part difference? What is the total part difference? So I'll write delta x is equal to L lambda. That's the total part difference. It should be equal to L lambda for maxima, right? But now the thing is delta x is d sin theta plus part difference केवल d sin theta नहीं है. There is an extra part difference due to this mirror. And what is this? So pi is the phase difference. If I want to convert it into part difference, I have relation delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. Okay, I want to calculate delta x. So you put the value of delta phi, it's pi here. Pi and pi will get cancelled out. Okay, and you will get answer delta x is equal to lambda by 2. Right? So that's the part difference, extra part difference. देखो phase difference था pi. Okay, and in the same way equivalently the part difference would be lambda by 2. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, lambda by 2 add कर दूँगा. Alright, and now you know what is sin theta. Sin theta is very small. So if sin theta is very small, then this is equal to theta. And now if we can write if theta is small, then tan theta is equal to theta. तो इसको मैं लिख सकता हूँ d tan theta, and this you will write as y, the distance on screen, divided by capital D. Okay, so this will become dy upon capital D plus lambda by 2 is equal to n lambda. Okay, and exactly in the same way, हाँ जी, नोड एंड एंटी नोड में था, बिल्कुल सही बात है. नोड एंड एंटी नोड में पढ़ा होगा आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ए वॉल. ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा, y you will get as n lambda capital D upon small d, ठीक है, minus capital D lambda by small d. ठीक है, so this is the extra. Now if I can take lambda d upon small d common, तो हम लोग क्या लिखेंगे, lambda d upon small d. Is this visible to you? n minus half, right? तो देखिए, yes, it is visible I guess. So y is equal to lambda capital D upon small d is multiplied with n minus half. Okay, so Shifa, you should have replied to my answer then, if I'm going slow, that what is the phase difference. देखिए मैं पहले आपको एक मौका देता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा यहाँ पे 2 मिनट में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले पढ़ लिया ये सब, तो आपको सोचने का मौका देता हूँ. एग्जाम में आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, only you have to be there and you have to use your own mind. Okay, so exactly मतलब वो सेम चीज़ ही है, मतलब आप थोड़ा सोचिए,
ठीक है ना, वैसे मैं करवा दूंगा 2 मिनट में, कुछ होगा नहीं, राइट। ओके, सो y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस हाफ। तो देखिए द डिफरेंस इज in simple YDSC when you don't have this mirror, these are the positions of minima, right? These are the position of minima, but here in Lloyd's mirror these are the position of maximas, right? Okay, so these are the position of maximas in case of Lloyd's mirror। तो exactly opposite हो जाता है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ से अब हम लोग वो भी निकाल सकते हैं कि what are the position of maximas, सॉरी मैक्सिमा का निकल गया, मिनिमास के लिए। तो मिनिमास के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, राइट। एंड नाउ डेल्टा एक्स इज व्हाट, डेल्टा एक्स इज डी साइन थीटा, ओके, एंड दैट अगेन आई कैन राइट एज वाई अपॉन डी प्लस लैम्डा बाय 2 is equal to n lambda plus lambda by 2. I have just multiplied lambda inside the bracket. So lambda by 2 and lambda by 2 cancel out. So you will get y is equal to n lambda capital D upon small d. So देखिए what are the position of minima, n lambda capital D upon small d. So if you put n equal to 0, you will get y is equal to 0. So that means on y equal to 0 you get a position of minima, right? So this part is clear to everyone? So exactly opposite हो जाएगा in case of like if you have studied YDSC, तो position of maximas मुझे याद आ रहा होता है कि लैम्बडा एल लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और मिनिमास का पोजीशन होता है n माइनस हाफ या n प्लस हाफ, जो भी आप लिखना चाहें, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। और यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट हो गया लोइड्स मिरर में। तो अब कंक्लूजन क्या है, याद कैसे रखना है आपको कि वॉट एवर रिजल्ट यू हैव गोट फॉर YDSC उसको अपोजिट कर दो। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ वील गो टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। Yes everyone, done? ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन, ऑल राइट शिफा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है। तो कितने लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म? हाउ मेनी पीपल हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म? सिंपल है, मतलब एग्जैक्टली वो एप्लीकेशन ऑफ YDSC है। अभी देख लेंगे इसको। अभी बस हाफ एन आवर का सेशन और है पिया, आफ्टर दैट इट वुड बी ओवर, ठीक। सो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या है, देखो ऑब्वियसली लाइक अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मैं आपको आज एप्लीकेशन बता रहा हूँ YDSC के सब एक्सपेरिमेंटल पार्ट, ओके। So biprism means obviously we would be using 2 prisms here now, okay? We would be using 2 prisms. तो देखते हैं सेटअप कैसा है इसका, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है कि I have one prism kept like this and now I have another prism which is kept like this, ठीक है। So these are the 2 prisms and both of them have same एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा एंड अल्फा। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, हेलो ब्रिज, हाउ आर यू? किसी भी प्रिज्म का एंगल कैसे डिफाइन करते हो आप? ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रिज्म ट्रायंगल दे दिया, ये प्रिज्म है मान लो एक, ठीक है। अब इस प्रिज्म में एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ और फाइनली यहां से रिफ्लेक्ट हो गया मान लो, ठीक है। इस एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा, इसको मैं बोल रहा हूं बीटा, इसको मैं बोल रहा हूं गामा। तो बताइए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इन दिस केस? अल्फा, बीटा और गामा।
this is the last session on wave optics, Priya. Like this is the last topic which we are going to cover. So most of you guys want session on SHM. So I'm going to start SHM from the next session. Okay. So what is the angle of prism in this case? Is it alpha, beta or gamma? What is your answer? Alpha. No light. Light is there, na? This is a light source. ठीक है. This is the angle of prism. This is like alpha, this is beta, this is gamma. So this is a refracted light ray. Gamma is the angle of prism. How many people say beta? Piyush says alpha. Okay. तो देखिए मान लो मैंने इसको ऐसा ना बना के ऐसा बना दिया. अब बताइए अल्फा, बीटा, गामा. What is the angle of prism now? Alpha, beta or gamma? In this case, what is the angle of prism? Is it alpha or beta or gamma? बट सर प्रिज्म से तो लाइट निकल जाएगी ना. हाँ तो निकल रही है ना भैया. मैं कहाँ रख रहा हूँ लाइट को. अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, TIR नहीं हो रहा है, तो प्रिज्म से लाइट निकल जाएगी. ठीक है. अगर TIR हो रहा है, मल्टीपल TIR हो रहा है, जैसे डायमंड के अंदर होता है, तो लाइट रे नहीं निकलेगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे. अच्छा इस केस में क्या होगा? हाउ मेनी पीपल से अल्फा? से यस इफ योर आंसर इज अल्फा. हाउ मेनी पीपल से बीटा? हाउ मेनी पीपल से गामा? और अब ऐसे कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत इंस्टा सोल पे बच्चे ये कह रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हम नहीं बता सकते? ऐसे लोग कितने हैं जो नहीं बता सकते? नो लिख दो कि हाउ मेनी पीपल आर देयर जो कह रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बता सकते. ऐसे में डिफाइन ही नहीं कर सकते एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा. 0%. और जो 0% नो, नोट बैड ने लिखा है नो. ठीक है. पिया ने लिखा है नो. वेरी गुड. सो वो सही है. ठीक है. तो इस बार मेजोरिटी नहीं जीत रही है. आंसर होगा इसका कि अभी नहीं बता सकते इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है. इस केस में मैं बता पा रहा था कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, बट इन दिस केस आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, बिकॉज एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि जैसे मान लो लाइट रे यहां से आया. ठीक है. अब ये रेफ्रेक्ट होगा ऐसे और फिर ऐसे रेफ्रेक्ट होगा. अब जिस सरफेस पे लाइट रे ने इंसिडेंट किया और जिस सरफेस से लाइट रे ने रेफ्रेक्ट किया, उन दोनों साइड्स के बीच में एंगल क्या है? वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. याद रखना. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि इफ द लाइट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन वन सरफेस एंड नाउ इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द सेकंड सरफेस. ठीक है. सो नाउ the angle between the incident surface and the surface from which the light ray is refracting going out, angle between these two surfaces is known as angle of prism. So in this case you can see angle of prism is what? Light ray is being incident on this surface, surface number 1, and light ray is coming out from this surface, surface number 2. So there is no role of surface number 3. इसका मतलब ये हुआ कि angle of prism is this angle alpha. So alpha is the right answer for this. Okay. हाँ, लाइट इंसिडेंट के बिना हम नहीं बता पाएंगे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. राइट. कि लाइट रे यहाँ भी इंसिडेंट हो सकती थी, लाइट रे यहाँ भी इंसिडेंट हो सकती थी, लाइट रे तो यहाँ भी इंसिडेंट हो सकती है. ठीक है. सो लाइट रे को इंसिडेंट करवाइए एंड नाउ यू सी कि फ्रॉम विच सरफेस द लाइट रे इज गोइंग आउट. ठीक है. सो लाइट रे इज गोइंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस. सो एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, दिस वन एंड दिस वन, इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो नोट डाउन कर लो इसको अपनी नोटबुक में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay. Now coming back to Fresnel biprism. So Fresnel biprism में क्या था? This is one prism. This is second prism kept like this. Angle of prism is alpha. This is also alpha. Okay. And now we have one source of light kept here. This is the source of light S kept over here. So light ray will fall on this prism now. Okay, it will go like this.
and now light ray will fall on this surface, okay, and it will bend like this. This is the screen over here. Is it visible to everyone? ठीक है. And now if I take this light ray, then it will take some this kind of path. Okay, so now you see यहां पे रेफ YDSC हो रहा है, ठीक है, यहां पे YDSC. अब देखो वर्टेक्स पे कोई पूछ रहा है तो वहां से हो सकता है डिफ्रैक्शन भी हो जाए लाइट रे का, ठीक है ना, मतलब शार्प एज हो गया ना, वो शार्प एज हो गया वो, तो डिफ्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी है. अरिजीत, ऑलराइट. सो नाउ इस पॉइंट सोर्स पे हमारे क्या देखेंगे हम लोग, इंटरफेरेंस पैटर्न, कि कहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो फिर से सेम बातें करेंगे. तो लाइट रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. सो जब मैंने स्क्रीन से पूछा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है, तो स्क्रीन ने मुझे जवाब दिया कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम हियर. दिस इज अवर वर्चुअल सोर्स नंबर 1 एंड लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, दिस इज अवर वर्चुअल सोर्स नंबर 2. So clear this part. This diagram is clear up till here. Any doubt in this diagram? No doubt. ठीक है. अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा. देखिए अगर मैं ये वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, जैसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म. हमने लिखा है ना बहुत बार, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए. यस और नो. ठीक है, देखिए आप कॉन्वेक्स हो कॉनकेव लेंस लेके यूज कीजिए, आपको कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो दीज आर जस्ट एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि क्या उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे जा रही है. ठीक है, तो आई हैव टेकन दिस स्पेशल केस, दीज आर द स्पेशल केसेस. ठीक है, उससे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है. अगर आप कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस लेंगे तो कुछ हो सकता है अलग रिजल्ट मिले. आप ट्राई कीजिए, यू कैन डिस्कस विद मी ऑन इंस्टासोल, आई विल हेल्प यू देयर. ठीक है, इवन आई हैव नॉट डन दैट, तो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. ठीक है, ओके जयराम. सो आप इसको पोस्ट कीजिए इंस्टासोल पे, आई विल रिप्लाई यू देयर कि क्या रिजल्ट्स होंगे. आप कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस लीजिए एक, ठीक है, इस शेप का होगा. ओके, एंड नाउ यू टेक लाइट रे, तो वो रिफ्रैक्ट होगी. तो पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि आपके पास 2 वर्चुअल सोर्स बनेंगे. तो पहले सोचिए कि आपके पास 2 वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट रे बनेंगे, तो आपको स्क्रीन को भी वैसे रखना पड़ेगा. ऑलराइट, सो नाउ S1 S2, this angle of deviation and this angle is also delta by geometry. देखो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, दिस इज पॉइंट M, दिस इज S2. ठीक है, और इसको मैं कुछ बोल देता हूं, एक सेकेंड. This is S2, and this length is, the total length is D, the distance between S1 and S2. Okay, this is D. And now you see, if this angle is delta, then this is also delta. Okay, if this angle is delta, then this is also delta. Okay, now if you write tan delta here, always remember what is delta. Delta is the angle of deviation. So tan delta I can write as perpendicular upon base, SS2 upon S2M. Okay, and what is SS2? What is SS2? SS2 होगा, this total length is D between S1 and S2, it's D. ठीक है, and SS2 is half of that, so SS2 would be D by 2. ठीक है, SS2 would be D by 2. Okay, and now what is this length, S2M? So इसको कुछ मान लेते हैं small a. ठीक है, this is well known for you, like if you are conducting experiment, then you know कि what is the distance between source and prism. Okay, so this distance is small a. Alright, so what is tan delta? Tan delta is equal to D by 2a. Okay, now what is tan delta? Tan delta is this deviation angle. So this deviation is very small. So what I can write?
ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा, भाई tan थीटा जब छोटा होता है तो इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, ऑलमोस्ट. तो tan डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इन दिस केस. ओके, नाउ आई कैन राइट थीटा फ्रॉम वन मोर पॉइंट. कैसे कि दिस डेल्टा आई कैन राइट एज म्यू माइनस 1 into a. This delta I can write as mu minus 1 into a. Okay, and what is a here? A is the angle of prism. Okay, angle of prism would be alpha. Okay, this is the angle of prism. It's an angle of prism that is alpha. Okay, so what I can write now? I'll erase this part. So delta is equal to d by 2a. Remember that. Okay, so what I can write here? That delta is equal to d by 2a, and this is also equals to mu minus 1 multiplied a. So from here what you're going to get, d is equal to 2a mu minus 1 into a. Okay, and a is the angle of prism, that is alpha here. So you can write this as 2a delta. Okay, so d is equal to 2a delta. All right, so what is the fringe width in this case? What is the fringe width? अब fringe width का देखो कोई फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, एग्जैक्टली सेम है. S1 S2 we have one point P here, so fringe width तो एग्जैक्टली वही आएगा, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. सही बात है ना, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. तो ये वाला डिस्टेंस लेट्स से कुछ b है, ठीक है. So in our case, what is capital D? Is it? I guess it's not visible to you. So this distance between the prism and the screen is B. I'll show it here. This length I have drawn. This is small b. Okay. So this is small b. So what is capital D in this case? Capital D is a plus b. So you know, a plus b. So capital D is a plus b. This is another equation I have. Okay, so one equation I have, the value of small d I know, it's 2a delta. Okay, and delta is not unknown. If we know the refractive index, if we know the angle of prism, I can calculate delta. Okay, value of a I know, value of capital D I know, and the wavelength which I am using, वो तो पता ही होगा ना, कौन सा light source use कर रहे हैं, this one. ठीक है, तो यहाँ से I can write. Can you explain again, Chitra, which part? You want me to explain once again. What I have said just now, the angle of deviation is mu minus 1 into a. That is the formula for a thin prism, right? And from here I can write tan delta is perpendicular upon base. So base is small a. So d by 2a. And now I have equated d by 2a to delta, right? Because this is also delta. So d would be equal to 2a delta. All right? So from here what I am going to write, ki capital D, if this distance is small a, and this distance is small b, so I can write capital D as a plus b, है ना? So what is the fringe width? Fringe width is, I am erasing this part now, you guys can take screenshot, ठीक है? So fringe width is given by lambda capital D upon small d. All right. So what is capital D in this case? Capital D is a plus b. Capital D is a plus b divided by small d, that is 2a delta. And what is delta? Delta is mu minus 1 into angle of prism, that is alpha. So ये रहा fringe width का formula. ठीक है. All right. Yes, Pia, you understood this part? Anyone having doubt? So this is the formula for fringe width. Lambda multiplied a plus b and divided by 2a into mu minus 1 into alpha. ठीक है. तो यहाँ से देखिए, we can do one more thing as we did in the case of a prism. ठीक है. और as we did in the case of YDSC, जब सिंपल YDSC था, तो इस पूरे के पूरे सेटअप को जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था अभी तक, जो भी राम कहानी यहाँ पे लिखी हुई थी,
इस पूरे के पूरे सेटअप को उठा के मैंने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो S1 S2 पूरा बिगड़ गया अभी, मतलब सिस्टम अपना है, सेटअप इज रेडी, मतलब उसको मैंने वाटर मीडियम में रख दिया अभी। तो अब बताइए क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके हार्टलाइन, यू स्लीप वेल, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, सो व्हाट इज द चेंज इफ आई कीप दिस होल सेटअप इन वाटर मीडियम। इस फॉर्मूला में कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे if I keep the whole setup in the okay Sambit, thanks for informing। ठीक है, तो मैं आपको वेरिएबल्स देता हूँ कि क्या लैम्बडा चेंज होगा इफ आई कीप इट इन द वाटर मीडियम, क्या ए चेंज होने वाला है, बी चेंज हो सकता है, क्या म्यू चेंज हो सकता है, क्या अल्फा चेंज हो सकता है। आई कैन सी ओनली 4 वेरिएबल्स हियर, 5 वेरिएबल्स। ओके, सो इसमें से कौन कौन से वेरिएबल चेंज होंगे, lambda, a, b, mu, alpha, if I keep it in the water medium। So reply this question, how many variables will change if I keep it in the water medium? Yes, all of you? Okay, someone is saying alpha, someone says b, and Shifa says mu. So definitely mu will change. Why do you think b will change? Why do you think alpha will change? Alpha is not going to change. See, it's about a prism. अब मैंने अगर मान लो प्रिज्म के अंदर प्रिज्म को पानी में रख दिया, if I keep the prism in the water medium, then dimension of prism is not going to change guys, है ना। मतलब if you are conducting the experiment in prism medium, तो dimension of prism is not going to change। Are you getting my point? ठीक है। हाँ, आपको जैसे बोले कि सर देखो बाहर से देखेंगे तो फिर वो apparent depth और वो सब, अरे मैं उस सेटअप को ऑब्जर्व भी अब मैं अंदर से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वाटर मीडियम ऑब्जर्वर इज ऑल्सो इन द वाटर मीडियम नाउ, ठीक है। सो ए, बी एंड अल्फा, these things are not going to change, remember। A is not going to change, B will not change, alpha will not change। क्या डिफरेंस होगा, लैम्बडा चेंज हो जाएगा और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली संबित, द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स विल चेंज बिकॉज for different medium the speed of light is different and hence frequency is constant, so definitely refractive index is going to change, all right। refractive index and lambda is going to change। Okay, so what I can write now, and the relation is, if you're writing c as f lambda, speed of light, v is equal to f lambda in general, okay, so this part is not going to change, the speed will get reduced by refractive index, so lambda will also get reduced by refractive index। Okay, so what we will say now, what changes I am going to make here in this equation, in this formula, beta will become, in water medium, this beta will become lambda by mu of water, lambda by mu of water। A and B are not going to change, so A plus B, 2A mu, as I told you, this is always relative, ये डेविएशन से ही आ रहा है ये, ठीक है ना, तो दिस इज अ रिलेटिव। ओके, सो राइट चित्रा, सो लैम्बडा एंड म्यू इज गोइंग टू चेंज, सो म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर माइनस 1 इनटू अगेन अल्फा। ओके, so these are the parameters which are going to change here। Okay, if you solve this equation, then you'll get this mu w, you will take LCM, you'll get mu g minus mu w will get cancelled out। So after solving this, what you're going to get, I'm directly writing it here, beta w will become lambda, अच्छा ये lambda ध्यान रखना, ये वैक्यूम का है, एयर का lambda है ये, ठीक है, because you have already divided the vacuum lambda with the refractive index।
ठीक है. So lambda multiplied a plus b divided by mu g minus mu w. Mu g minus mu w. Okay. So this is going to be the final formula, and here you will have 2a alpha also. 2a alpha will also be there. All right. So is this part clear to everyone? This is the fringe width in water medium. So beta w will be lambda multiplied a plus b divided by mu g minus mu w, okay, multiplied with 2a alpha, because this mu w will get cancelled out by taking LCM. Okay. अच्छा, अब एक चीज़ और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये फ्रेजनल बाइप्रिज्म कंप्लीट हो चुका है. सो नाउ यू गाइस कैन सोल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रेजनल बाइप्रिज्म एंड लोयट्स मिरर. ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा लोयट्स मिरर और फ्रेजनल बाइप्रिज्म में. सो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इट्स ए न्यूमेरिकल ओनली बेसिकली, कि जो वर्चुअल सोर्सेज बन रहे थे फ्रेजनल बाइप्रिज्म में S1 एंड S2, क्या उनके बीच में डिस्टेंस चेंज होने वाला है? व्हाट आई एम आस्किंग यू, आई विल रिपीट अगेन. The distance between the virtual sources S1 and S2, do you think it will change now? SHM lecture, like it would be updated on the Instasol app, so you can check it from there. ठीक है, तो देखिए distance between the virtual sources will definitely change, and why it will change, the reason is बिकॉज डी एयर में कितना लिखते हो आप, जो डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल सोर्स था, ठीक है, वो आप लोग कैसे लिखते थे, 2a मल्टीप्लाइड डेल्टा, 2a मल्टीप्लाइड डेल्टा, सो दैट इज 2 म्यू माइनस 1. और अब अगर आप लिख रहे हो वाटर मीडियम में, देन यू विल राइट 2a अगेन. ठीक है, वी हैव डिराइव्ड दिस distance between the virtual sources 2a multiplied delta, right? So no, answer is no, it will change. Gattu, Prasanna. So 2 mu of glass divided by mu of water minus 1. So definitely you can see you have divided this number with, this is already mu of glass, with mu of water. So obviously it will change, okay, and it will reduce. So dW is less than dA. Okay, so the distance between the virtual sources S1 and S2 will decrease. Okay, so clear this part everyone? Alright, so you can raise this query on the support team, okay, of Instasol support team, so they will help you in this part, Sambit. Alright, so that's all for today guys. Now we will be meeting in the next week with another topic, simple harmonic motion. This is decided by you only. Okay, so we'll be starting the complete lecture series on simple harmonic motion. Okay, so you all have to attend these sessions because it's a class 11 topic and one of the important topic for the competitive examinations like JEE, NEET and other exams. Alright, so that's all for today. Bye bye, good night, enjoy.